बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नवीद मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि व्यूअर्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने के लिए CMA टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब्स के मेंबर्स हैं, जहां पे हम डिफरेंट सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद हम अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी सारे अवार्ड्स विन किए हैं और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक थी, लीडरशिप स्किल्स काफ़ी वीक थी। और इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद रेगुलर सेशंस, रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इम्प्रूवमेंट की। और अगर आप भी हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आज भी हमारी मीटिंग थी उसी CMA टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब में, जिसमें मैं एज ए प्रिपेयर्ड स्पीकर पार्टिसिपेंट था। तो अभी मैं आगे चल के अपनी आपको स्पीच दिखाता हूँ कि मैंने अपनी स्पीच भी डिलीवर की, जो कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर होती है, लाइक 4 to 5 मिनट्स के अंदर अपनी स्पीच को कंक्लूड करना होता है और एक स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर करना होता है, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका एवेल्युएटर्स बैठे होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जिसमें बॉडी जेस्चर्स है, आपका फ्लुएंसी है, आपकी ग्रामर है और आपकी प्रेजेंटेशन है और आपका कॉन्फिडेंस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक आपको आपका एक स्पेसिफिक एवेल्युएटर बैठा होता है और जो आपको प्रॉपर एवेल्युएट कर रहा होता है कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ डिलीवर करनी थी और कहाँ पे कैसे क्या चीज़ डिलीवर की गई। तो आगे चल के मैं आपको अपनी स्पीच दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा CMA टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ का आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स और पब्लिक फियर को कंकर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखना ना भूलिएगा और एंड पे देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि वेयर आई एम स्टिल लैकिंग, वेयर आई नीड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड how it can be improved more. So thank you so much. Keep watching my next speech, which is regarded from the CMA Toastmasters International Club meeting. Thank you so much, Asam Bhatti. Hello everyone. Very good afternoon to all of you. Thank you Toastmaster of the Day, Muhammad Asam, for giving the chance to participate as prepared speaker. As our today's meeting theme is what exactly are the soft skills. I guess our Toastmaster of the Day and my fellow speakers have already been described a lot about the soft skills. And of course, our next segment of table topics might be relevant to our theme. That's why myself decided to give today a different message. It is somehow indirectly related to soft skills, but may not be more. As Mr. Asam Bhatti described that my today's topic is why many people don't reach their full potential. I just want to repeat one more time, why many people don't reach to their full potential. We have only one life, and that is it. So it would make sense that everyone would try to live it to the fullest by following their dreams. But if you ask anyone, they would like to reach their full potential, I believe everyone would say yes. However, I find that some people don't reach their full potential, including myself. So what is stopping us? What are the conditions necessary to make the transition from your current life to the best version of it and the best version of yourself? What causes us to conform when we should be moving forward with the excitement? The only conditions necessary is for you to be alive. Really, that is all it takes for you to move forward your vision.
especially considering that we are in 21st century, and especially if we are living in the first world countries list. That is all we need. But if that is all we need, then there must be something blocking the road. So let's have a look at some reasons that causes us to stagnate. But at the same time, I would like to suggest you guys, please, after my speech, once you will be free at home, just try to find some reasons which stopping us. If I will define in one phrase for these, I can say the limiting beliefs. So please don't listen my speech only for the evaluation, for grammar mistakes, for fluency check. Just consider this a message for yourself and try to find your limiting beliefs. Then we will have a special session through WhatsApp group or our next meeting to discuss limiting beliefs and how we can overcome on these. Keeping in view my limited time, I will try to share some limiting beliefs which stopping us to reach our full potential. There are a lot of things, but I cannot brief in this meeting because we are limited to our time. So first of all, I would like to say the fear of failure. This is one of the most common ones. No matter how developed and sophisticated we are, no matter what you have already achieved, at some points in your life you have experienced some sort of fear of failure. For example, if currently you are working in a management post of any organization and earning a handsome amount, so what do you think? You achieved everything? Why you are not trying to be an entrepreneur? Even you have the skills more than anyone. That's why you are the finance manager, accounts manager, operation manager of any big organization. If you can manage the operations and finance of any other persons, why you cannot manage your own? Actually, behind this story is first and most common limiting belief, that is called fear of failure. We are afraid maybe if we will start our own business, we cannot earn whatever we are earning now. So fear of failure starts from here. So this is the fear of failure, and we all have too many limiting beliefs. Try to find out our limiting beliefs which are stopping us. So we can discuss, we can have a special session on these limiting beliefs and how we can overcome. We will ask to everyone if they want to conquer this fear. Thank you so much.